आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। So the question here is, we have a paragraph on sickle cell anemia. Sickle cell anemia, which is a genetic disorder where the body produces an abnormal hemoglobin called the hemoglobin S. Red blood cells are normally flexible and round, but what happens in sickle cell anemia, the round blood cells take the shape of sickle. When hemoglobin is defective, the blood cells take on a sickle or crescent shape. Like normal blood cells are round or oval, but what happens in sickle cell anemia, they take the sickle cell shape or crescent shape. So this sickle cell shaped blood cells are defective. So sickle cell anemia जो है वो कैसे होता है? It occurs or it is caused by mutation in gene called HBB. It is an inherited blood disorder. ये एक inherited blood disorder है और ये तभी हो सकता है अगर दोनों maternal and paternal, like both the parents have copies of HBB genes and they are defective. In other words, अगर हम इसे एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे करेंगे? If an individual receives just one copy of the defective HBB genes, अगर पेरेंट, पैटर्नल एंड मैटर्नल किसी एक के पास HBB जीन है, डिफेक्टिव जीन है, लेकिन मदर के पास नहीं है, तो जो चाइल्ड होगा वो HBB डिफेक्टिव नहीं होगा. Either, let's repeat, it is if an individual receives just one copy of defective HBB gene, either from mother or father, it's not the gender specific or chromosome specific because it is a autosomal recessive disorder, and then the individual has no sickle cell anemia but has what is called a sickle cell trait. अब मदर एंड फादर दोनों में से किसी एक के पास अगर या दोनों में से कोई एक डिफेक्टिव है तो चाइल्ड में उसके ट्रेट्स प्रेजेंट होंगे. द चाइल्ड विल बी द कैरियर. द चाइल्ड कैन बी द carrier of sickle cell anemia but would not be defected with it, would not show the symptoms. People with sickle cell trait usually do not have any symptoms or problems, but they can pass the mutated genes onto their children. So there are three inheritance scenarios. हमारे पास 3 inheritance scenarios हैं which can lead to a child having sickle cell anemia. और वो 3 scenarios क्या हैं? या तो दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं, if both the parents are carrier, अगर दोनों कैरियर हैं, so the child will be a defective of sickle cell anemia. And if one parent has sickle cell anemia, this was the first scenario. Second scenario we have is if one parent has sickle cell anemia and other is just a carrier, so the child again will have the possibilities of getting infected or defected with sickle cell anemia. And the third scenario is if both the parents are infected with sickle cell anemia, then the child will probably have the symptoms and will show the sickle cell anemia disorder. So let's see the question we have here with us. If both the parents, the question says if both parents have sickle cell trait, then there is dash of the child having sickle cell anemia.
सो इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू टेल कि अगर दोनों पेरेंट्स जो हैं वो सिर्फ कैरियर्स हैं इन दिस केस, तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि उनका जो अपकमिंग चाइल्ड होगा उसको सिकल सेल एनीमिया होगा. सो फॉर दैट वी विल सी अ फिगर हेयर. As in this figure we can see that parents they both are carriers and not infected completely. They are just the carriers. In this case the AS represents the trait or the carrier which are parents here, and capital A that is usual, no sickle cell anemia. तो हमारे पास जो चार पॉसिबिलिटीज़ आएंगी वो ये होंगी कि या तो चाइल्ड जो है वो नॉर्मल हेमोग्लोबिन के साथ पैदा होगा, या फिर सिकल सेल एनीमिया ट्रेट उसमें प्रेजेंट होगा, उसके 50% चांसेस हैं हमारे पास आउट ऑफ 100, एंड वो सिकल सेल एनीमिया से डिफेक्टेड होगा, उसके हमारे पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है 1 आउट ऑफ 4, दैट इज 25% chances of child being a sickle cell anemia defected. So there are only 25% chances of child being sickle cell anemia defected if parents are only carriers, both the parents are carriers. So option 1 which says 25% is the correct answer. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.